आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो परमुटेशंस कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम्स किसकी? असाइनमेंट की प्रॉब्लम। सो आज तक हमने जितने ही परमुटेशन के लेक्चर लगाए हैं उसमें मैंने उनको समझाया परमुटेशन कैसे करते हैं और उनके बेस पर एग्जांपल्स लिए। आज मिक्स प्रॉब्लम जो हमारे असाइनमेंट की है, जो असाइनमेंट आपके हाथों में है, उसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 of permutations and combination of our assignment. First question है the number of all 5-digit numbers divisible by 4 that can be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4 without repetition. Without repetition is option A 36, B 30, C 34 and D none of these. Now the question is very much clear. It is number of all 5-digit number divisible by 4. अब हमें पता है जो नंबर्स 4 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होंगे। सो इसका मतलब लास्ट टू डिजिट्स of given digits are, or I'll say can be, क्या क्या हो सकते हैं? 0, 4, it comes out to be 1, 2, 0, 4 and it comes out to be 1, 2. 1 के बाद next 1, 4, 1, 3 is not possible. Then we go for 2, 0, 2, 4. Then it comes out to be 3, 2 and 4, 0. So total ये 6 numbers बन रहे हैं। कौन से 6 numbers? मतलब इसका मतलब कुछ जीरो वाले, कुछ नंबरों में 0 आ रहा है, कुछ नंबरों में 0 नहीं आ रहा। तो हम पहले कैटेगराइज कर लेते हैं 0 वाले नंबर्स 0, 4, 2, 0 और 4, 0। For these digits, for these to be last 2 digits, मतलब लास्ट डिजिट हमने फिक्सअप कर दिया या तो 0, 4 या 2, 0 या 4, 0। हम 0, 4 वाला केस लेते हैं और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट 2 डिजिट्स फॉर दीज टू बी लास्ट 2 डिजिट्स बी 0, 4। नाउ इससे पहले 3 डिजिट आएंगे। यहां पे इसको हम लिखेंगे 10 की रेज़ पावर 4 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय किनसे फिल्ड करना है? और रेपिटेशन हमें अलाउड नहीं है। हमें क्या क्या आ सकता है? 0, 4 को छोड़ दो, इट कैन बी 1, 2, 3। तो इट कम्स आउट टू बी, यहां पे कितने आ सकते हैं? 10 की रेज़ पावर 4 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 ways. Then 10 the cube place can be filled by 2 ways as repetition is not allowed, and 10 square place can be filled by 1 way. This is for the case if 0, 4. Similarly तीनों में 0, 0 है, so for all these above and it comes out with total is equal to 6 ways. For all above numbers, to be last digit, total numbers
जो टोटल नंबर बनेंगे, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू, 3 नंबर है, 3 into 6, it comes out to be 18. So all 5-digit numbers with last digit they are being 0, all 5-digit numbers which last digit being 042040, total numbers possible are 18. Now last 2 digit can be, लास्ट 2 डिजिट मतलब जो 4 से डिविजिबल होंगे, लास्ट 2 डिजिट नंबर्स कैन बी 12, 24 एंड 34. इस केस में क्या आएगा, फॉर लास्ट 2 डिजिट्स, इसका मतलब है हम एक पर्टिकुलर केस 12 वाला कर लेते हैं. इट विल बी द सेम फॉर ऑल दिस 3. यहां पे आएगा 10⁻⁴ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 10⁻⁴ place can be filled by, it comes out to be, यहां पे बच गया, it is 0, 3, 4. 0 नहीं आ सकता बिकॉज 0 आएगा तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. तो 10⁻⁴ place can be filled by 2 ways. 10³ place can be filled by, it is again 2 ways, बिकॉज यहां पे 0 आ सकता है लेकिन ऑलरेडी 2 डिजिट रह गए. And 10² place can be filled by 1 way. Required way, this comes out to be 4 ways total. Required ways for all above digits. All above digits is equal to 3 into 4, it is 12. So total digits, total numbers possible, total numbers, कौन से numbers, 5 digit numbers which are divisible by 4 is equal to 18 plus 12, it comes out to be 30. So right answer is B part. So in brief मैं समझाना चाहूंगा कि हमने जो numbers 5 digit numbers हैं divisible by 4, divisible by 4 हम कैसे लेते हैं, हमें पता है रूल, जो नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे. हमने लास्ट 2 डिजिट फिक्स अप किया 04, 12, 20, 24, 32, 40. 04, 20 और 40 वालों का एक केस बना लिया, 12, 24 और 32 वालों का अलग केस बना लिया. इधर टोटल डिजिट कितने बन जाएंगे, इट इज, यहाँ पे टोटल नंबर बन जाएंगे 18 बाय फिक्सिंग देम 1 by 1. एंड लास्ट 2 डिजिट में भी 12, 24 एंड 32 हैं, तो टोटल नंबर बन जाएंगे, इट इज कम्स आउट टू बी 12. So total number formed by using this 5 digit numbers possible divisible by 4 are 30. Question number 2. An examination paper consists of two sections. Each containing 6 questions. A candidate is required to answer 6 questions. A candidate is required to answer 6 questions in total with a maximum of 4 questions from one section. The number of ways in which paper can be attempted is 1000 is A option, B is 850, C is 1050,
D is 1150. An examination paper consists of two sections, each containing 6 questions. A candidate is required to answer 6 questions. It is two section, दोनों एक सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है. इसका मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज सेक्शन ए में देयर आर 6 क्वेश्चंस, section B there are 6 questions. So there are two sections and a candidate is required to answer 6 questions. A student has to attempt 6 questions in total with maximum of 4 questions from one section. ज़्यादा से ज़्यादा एक सेक्शन में से 4 क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट कर सकता है. सो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और वेज, बिकॉज हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी हैव मेकिंग द सिलेक्शन, वी आर मेकिंग द ग्रुप्स. सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? 6C3. पहला केस है 6C3, पहले में से 3 क्वेश्चन ले लिए एंड दूसरे में से 3 क्वेश्चन ले लिए. पहले सेक्शन ए में से भी स्टूडेंट ने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दी एंड सेकंड पार्ट से भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दी. सेकंड पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट ने पहले सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए. और ये भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट ने पहले सेक्शन से 4 अटेम्प्ट किए और दूसरे सेक्शन से 2 अटेम्प्ट किए. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इट इज, अब इसको सॉल्व करना है, इट कम्स आउट टू बी 6 5 4 3 2 1. It is 6 5 4 3 2 1, 6 5 2 into 1, 6 5 2 into 1 plus 6 5 4 upon 3 2 1. It comes out to be 6. This is 6 5 6 5 2 into 1 into 6 5 2 into 1. Now it comes out to be calculations. It is 6 6 आपस में cancel out हो गया. Now 2 3 da 2 3 da. It is 2 3 da 2 3 da. हमारे पास आ गया 20 into 20. It is 20 into 20 is 400 plus 225. 15 into 15 is 225 and again here it is 225 and it comes out to be 850 on adding. So total number of ways जो एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है विद दिस कंडीशन के मिनिमम से मिनिमम एक सेक्शन में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसे. सो दैट वेज आर 850. So the correct answer of question number 2 of our assignment is 850. Question next है, the number of ways of painting the face of a cube with 6 different colors. It is question number 3rd of our assignment is the number of ways of painting the faces of a cube with 6 different colors. With 6 different colors is A part is 1, B 6 factorial, C 6 the power 6 and third is 2 the power 6 minus 4. So it is the total number of ways of painting the face. Now यहां पर हम कह सकते हैं first face can be painted by 6 ways.
First face can be painted by 6 ways. Second face can be painted by 5 ways. Third face can be painted by 4 ways. Fourth face can be painted by 3 ways. Fifth face can be painted by 2 ways, and sixth face can be painted by 1 way only. And also, so required ways यहाँ पे क्या बन गए? Required ways are 6, 5, 4, 3, 2, 1. But these faces are identical. But these faces are identical. These faces are identical का क्या मतलब है? जैसे कोई भी हम पहले क्वेश्चंस करते थे, एक क्वेश्चन था AGAIN, अगेन इसको कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? हम यहां पर कहते हैं 5 लेटर्स हैं, 5 letters can be arranged themselves 5 factorial by 2 factorial because A symmetrical, दोनों A repeating था. तो यहाँ पे 6 के 6 faces identical है, तो 6 के 6 faces identical वो है, but these faces are identical, so required ways are, it is 6, 5, 4, 3, 2, 1 upon 6 factorial, or it comes out to be 1 way. हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 things have to be arranged at 4 places by 4 ways. ऐसे ही इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? 6 faces can be painted by different colors by 6p6 upon 6 factorial ways. As 6 faces हैं, 6 कलर हैं और they are identical, answer comes out to be 1 way only. Question number 4. Question number 4 of our assignment is, it is the number of ways of painting the face of a cube. The number of painting the faces of a dice, not cube. The question is faces of a dice numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6 with 6 different colors. With 6 different colors is A 1, B 6 factorial, 6 the power 6, D 2 the power 6 minus. अब इस क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखो, मैंने ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड किया. पिछला क्वेश्चन में यही था, द ओनली वर्ड वाज क्यूब वाज. यहां पे नाम दे दिया डाइस. डिफरेंस क्या आ गया? वहां पे क्यूब का कोई नंबरिंग नहीं थी और यहां पे जो क्यूब है उसको नंबरिंग दे रखी है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इसका मतलब यहां पे हम क्या करेंगे? जब हमें पता है, जब पर्टिकुलर फेसेस को नेम दे रखा है, फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, तो हम यहां पे ये नहीं कह सकते कि दीज आर आइडेंटिकल, बिकॉज हर एक फेस पे मार्क किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दिस वे. सो इसके बारे में इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे 6 faces of a dice. 6 faces of a dice can be painted by
6 different colors by 6 ways. This is equal to 6 factorial. 6 faces of a dice can be painted by just 6 by 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल इसलिए नहीं आएगा बिकॉज डाइस के जो फेसेस होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते. आइडेंटिकल मतलब वैसे तो लेंथ ब्रेथ सब कुछ इक्वल होता है लेकिन क्या नहीं होता वो उनके ऊपर मार्किंग अलग अलग की होती है. सो इसके लिए हम कहेंगे द राइट आंसर इज 6 by 6 दैट इज सी पार्ट. So this was the question number 4 of our assignment. Now I am coming to question number 5 of our assignment. Question 5th of our assignment is, there are n marked seats around a circular table. The number of ways in which m is less than equal to n people can be seated is A. This is npm. B, m minus 1 factorial. C, ncm into m minus 1 factorial. N minus m plus 1 factorial. There are n marked seats around a circular table. The number of ways in which m people can be seated is. Now, important thing, there are n marked seats. वैसे जनरल रूल क्या होता है, n people can be arranged at n places in a circle by n minus 1 factorial. बिकॉज उस केस में कुछ अरेंजमेंट जो उनसे होते हैं जैसे मैंने पहले लेक्चर में समझाया वो सेम हो जाते हैं बिकॉज देयर इज नो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3. बट हेयर मतलब इस क्वेश्चन में देयर आर n मार्क सीट्स. वहां पे मार्क किया हुआ है सीट्स को, सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4 लाइक दिस वे. और हमें n पर्सन नहीं बिठाने हैं, हमें m पर्सन बिठाने हैं. मतलब ये 10 सीटें हैं तो 4 पर्सन को अरेंज करना है, 5 लोगों को अरेंज करना है. उस केस में लाइन और सर्कल वाले केसेस में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता. जब इन ए सर्कल हमें सीट्स को मार्क किया हुआ है तो चाहे हम लाइन से करें मेथड से चाहे सर्कल से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता. सो यहां पे क्या कहेंगे, say we can say m people can be arranged at n places by np m ways. दूसरा इसका मेथड हम यही बोलते हैं कि फर्स्ट पर्सन कैन बी सीटेड बाय n ways, second person can be seated by n minus 1 way, like this way. It goes up to, by solving, by multiplying, we get n people can be arranged by np m ways. So the right answer is A part. अब next question जो हमारे हैं, it is question number 6 of our assignment. Question number 6 of our assignment is,
the maximum number of intersection points the maximum number of intersection points of n circles is. A option is NC2, B NP2, C it is NC2 by 2, D NC2 माइनस है. इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स या इंटरसेक्शन पॉइंट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ n circles can be मतलब जो दो सर्कल है ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं. हम दो सर्कल्स को लेंगे, इट कम्स आउट टू बी, वो अपने आप को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? दे कैन, ज्यादा से ज्यादा दो सर्कल अपने आप को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? इट इज 2 वे. सो हम कहते हैं इट इज 2 सर्कल्स कैन बी अरेंज बाय 2 वेज, इट इज 2v2 कैन बी अरेंज. जो फार्मूला इसका होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ n सर्कल्स कैन बी np2. द राइट मेथड इज, जैसे दो हम मैं एग्जांपल लेता हूं पहले दो सर्कल्स की. हमें सपोज क्वेश्चन ना आता हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले n की जगह 2 पुट करके चेकआउट कर लेंगे. द इजीएस्ट मेथड इज, क्योंकि जब 2 से कर लो, 3 से कर लो, फिर पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है. n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो इट इज 2p2, इट कम्स आउट टू बी 2p2, 2 वेज. देन ऐसे 3 सर्कल आपस में कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? हम 3 सर्कल्स आपस में बनाएंगे. इट इज 1, दिस इज 2, दिस कम्स आउट टू बी इट इज दिस वन. सो 3 सर्कल्स आपस में ज्यादा से ज्यादा कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? इट कम्स आउट टू बी, ऐसे दिखने में लग रहा है इट इज 1 2 3, बट हम कह रहे हैं ये सर्कल इससे भी इंटरसेक्ट करेगा अलग पॉइंट से, ये पॉइंट ये इससे अलग कर सकता है. तो टोटल सर्कल जो आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 6 वे से. सो इट कम्स आउट टू बी 3 circles can intersect themselves by maximum of, ज्यादा से ज्यादा by np 3 ways, that is 3p. It comes out to be 3p 2 ways. It comes out to be 3p 2 ways. This is 3 factorial, 3 minus 2 factorial. It comes out to be, this is equal to 6 factorial, 6 ways. So n circles आपस में कितने वे से अरेंज करेंगे? It comes out to be np 2 ways. So the right answer is B part. मैं अब आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7th. क्वेश्चन नंबर 7th है, इट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ intersection points the maximum number of intersection points of n straight lines none of which are parallel to each other is A NC2, B NP2, C NC2 by 2, NC2 by minus n. So the question is
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एन सर्कल्स कैन बी। अब हमें आइडिया नहीं है, सपोज हमें कितना पता है कितना आएगा, हम पहले क्या लिखते हैं, वी टेक एन इज इक्वल टू 2। दो लाइंस आपस में ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं 1 पॉइंट ओनली। सो दो लाइंस आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? 1 पॉइंट से। अब n की जगह 2 सब में पुट करके देख लो किससे आंसर आता है। इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? इट इज 2c 2 इज 1, एक ऑप्शन। बी इट इज np2, इट इज 2p2, ये बन जाएगा 2। सी इट कम्स आउट टू बी nc2, दिस इज 1/2। एंड यहां पे क्या आ जाएगा? इट इज 1c2, n इज इक्वल 2, इट इज 1, 1 - 2, वो -1, वो तो रिजेक्टेड हो जाएगा। सो राइट आंसर किस में आ रहा है? 1। 1 आंसर किस में आ रहा है? इट इज 1। सो वैसे भी एक पॉइंट होता है हमें याद रखने के लिए, दैट इज n सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट देमसेल्व्स बाय np टू वेज, और n straight lines can intersect themselves by nc two ways. So यहां पे क्या आएगा? We can say maximum number of ways, ये मैंने पॉइंट भी लिखवाया हुआ पहले, maximum number of ways by which n straight lines can intersect themselves by nc two ways. So right answer is A part. We are continuing with the permutations and combinations. Permutations and combinations में हम कर रहे थे वर्ड प्रॉब्लम, और जो असाइनमेंट हमने आपको दे रखी है उसके असाइनमेंट के क्वेश्चन। अभी तक पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रॉब्लम कराई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स मैं क्वेश्चन नंबर 8 से प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ आवर असाइनमेंट, question number 8 of our assignment is the number of triangles that can be formed by joining the vertices of, it is by joining the number of triangles that can be formed by joining n points of which m are collinear. N points of which m point are collinear is A option is nc3 minus m plus n. B option we have nc3. C option we have nc3 minus mc3. D n minus mc3. पहले तो एक सिंपल लॉजिक लेके चलते हैं हम कि ट्रायंगल्स 10 पॉइंट दे रखे हैं, 10 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बनेगी? 12 पॉइंट दे रखे हैं, 12 पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बनेगी? अब हमें 10 पॉइंट्स या 12 पॉइंट लेके ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। द वेरी सिंपल लॉजिक इज, हम क्या करेंगे? इट कम्स आउट टू बी 10 पॉइंट से हम कह सकते हैं से फ्रॉम 10 पॉइंट्स, कौन से पॉइंट है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फ्रॉम 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स 3 triangles, triangles can be formed.
ट्रायंगल मतलब a three-sided figure. Three-sided from 10 points, total triangles can be formed is equal to 10C3. Total triangles can be formed is equal to 10C3. So now is a point. ये 10 के 10 क्या होने चाहिए? नॉन क्लीनियर पॉइंट्स. एंड क्लियरली यहां पे n पॉइंट टोटल दे रखे. सो व्हाट आई विल से, अब यहां पे हम कहेंगे फ्रॉम गिवन n पॉइंट्स we do write down from given n points total number of triangles formed is equal to nc3. Now so total triangles formed nc3, ये जब कोई कंडीशन ना दे रखी हो तो हम लिखेंगे nc3. नाउ m पॉइंट्स, ये कौन से पॉइंट दे रखे हैं? m पॉइंट्स आउट ऑफ n. इन्हीं n पॉइंटों में कोई m पॉइंट है, जैसे 10 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर है. सो यहां पे m पॉइंट्स आउट ऑफ n गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. इसका मतलब है जो हमने m पॉइंट्स की ट्रायंगल बनाई है वो ट्रायंगल्स पॉसिबल नहीं है. सो इसका मतलब क्या हुआ? आई कैन से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू nc3 माइनस mc3. उन m पॉइंटों से जितनी भी ट्रायंगल बनेंगी वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी. सो द राइट आंसर इज, it is required number of triangles are nc3 minus mc3. Looking upon 4 options we have, हमने देखा C is the correct option. C is the right answer. Question number 9th. Question number 8 के बाद question number 9th. The number of triangles that can be formed by joining, the number of triangles that can be formed by joining vertices of n-sided polygon is, A option we have nc3, B option we have 2nc3, C option we have it is nc3 minus nc2, D option we have np3. Now similar question, the number of triangles that can be formed by joining the vertices of n-sided figure. Now clearly here there are n non-collinear points. There are n non-collinear points और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कोई और कंडीशन बनती नहीं है, सिर्फ आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड आउट ऑफ पॉलीगन. आप सिर्फ सिंपल समझ के चलो कि आपको n पॉइंट दे रखे हैं, वो चाहे पॉलीगन की शेप में है या नहीं है. देयर आर n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड
इज इक्वल टू NC3। सो n पॉइंटों की जो टोटल ट्रायंगल बनेगी दैट इज इक्वल टू NC3। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज इट इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाहूंगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर। उसमें पहला पॉइंट है n straight lines can intersect n straight lines can intersect themselves by n straight lines can intersect themselves at most, वर्ड में टर्म कर रहा हूं एट दी मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम ये लेके चले कि n पॉइंट्स हैं और उनमें से m आर कुलिंग है तो डिफरेंट हो जाएगा। द वर्ड आई एम यूजिंग इट, n स्ट्रेट लाइंस कैन इंटरसेक्ट देमसेल्व्स एट द मोस्ट बाय NC टू वेज। सो जो n स्ट्रेट लाइन होती है ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कितने वे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं? They can intersect themselves by NC two ways. Now it comes out to be next, maximum number of points of intersection of n circles are NP2। सो याद रखने का पॉइंट है n circle can intersect themselves by NP2 ways। Third point, one straight line cut the circle at most 2 points so n straight lines cut the m circles n straight line cut the m circles by कितने वे से? हम कहेंगे एक स्ट्रेट लाइन कट सकती है एक सर्कल को 2 पॉइंट से, एन स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को कट कर सकती है 2n वे से, और इट कम्स आउट टू बी n straight lines cut into m circles, this is equal to 2n m ways। नाउ ये मैंने पॉइंट लिखवाए हैं इंटरसेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल के ऊपर। अब इन्हीं के बेस पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ उन क्वेश्चंस को देखो जो अब आने वाले हैं। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is the number of intersection point points given by n circles and 2n straight lines, the number of intersection points given by n circles and 2n straight lines is A 4n square, B n into n plus 7,
C 7n square minus 2n. D 3n p2. The number of intersection points given by n circles and 2n straight lines. Now हम सेम वे से करेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट पॉइंट इज, इसको करने का वे आउट क्या है, हम देखेंगे एंड सर्कल्स आपस में कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइंस आपस में कितने वे से इंटरसेक्ट कर सकती हैं. और टू एंड स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल को कितने पॉइंट से कर सकती हैं. तीनों केसेस को हम निकाल के तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज, हम लिखते हैं एन सर्कल्स कैन इंटरसेक्ट themselves at np2 ways. N circles can intersect themselves at np2 ways. N straight lines can, now there are not n, there are 2n straight lines. So 2n straight lines can intersect themselves by nc two ways. Now third point is, now one line can cut n circles by, या वन बाय वन कर लेते हैं. वन लाइन कैन कट वन सर्कल बाय टू वेज. वन लाइन कैन कट एट द मोस्ट n circle by 2n ways. Now 2n lines cut n circle by, it is 2n into 2n, it comes out to be 4n square ways. So total ways are 4n square plus np2 plus nc2. Total ways are 4n square plus np2 plus nc2. That means it comes out to be 4n square plus n factorial upon n minus 2 factorial plus n into n minus 1 by 2 factorial. This is equal to 4n square plus n into n minus 1 into, it comes out to be n minus 2 factorial upon n minus 2 factorial, n into n minus 1 factorial by 2. This will be cancelled out. 4n square plus n square minus n, and nc2 is like this way. It comes out to be n into n minus 1. Now it comes out, it is not 2n. यहाँ पे 2n straight lines can intersect. ये correction करनी पड़ेगी बेटा आपको, because there are 2n straight lines, so 2n straight lines can intersect themselves by 2n two ways. So it comes out to be 2n way, 2nc2 ways. यहाँ पे बन जाएगा 2nc2, यहाँ पे बन जाएगा 2n into 2n minus 1 by 2. Now 2 and 2 will be cancelled out. It comes out to be n into 2n minus 1. N into 2n minus 1 plus 2n square minus n. This is 7n square minus 2n. So the correct answer, it comes out to be C part. Now इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के बाद I am coming to question number 11. Question number 11. There are 2 points on a line. There are 2 points on a line. 3 points
on another line and 4 points on yet another line and 4 points yet on another line, the total number of triangles that can be formed by joining these points are 30, B option 205, 79, D is 85. Now सिमिलर सा क्वेश्चन हमें गिवन है 2 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, 3 पॉइंट्स ऑन अनदर लाइन, 4 पॉइंट्स आर येट ऑन अनदर लाइन। अब इसमें हम कैसे करेंगे? इन 2 पॉइंटों की तो कोई ट्रायंगल बनती नहीं है, लेकिन हाँ उनकी एक साइड तो यूज हो सकती है। सेम वे से 3 पॉइंटों की ट्रायंगल कितनी ट्रायंगल बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी। और 4 पॉइंट्स की जितनी ट्रायंगल बनेगी वो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम क्या ले लेते हैं? वी कंसिडर दीज ऑल आर 9 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, वी ऐड ऑल दीज पॉइंट्स। टोटल ट्रायंगल एज ये नॉन कोलिनियर नहीं है, लेकिन हम इसको पहले ले रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड, total number of triangles formed out of n points are NC3, sorry यहाँ पे n क्या? 9। total number of triangles formed out of n point, out of n 9 points, out of 9 points are 9C3। now सब्ट्रैक्टिंग, कौन सी सब्ट्रैक्ट करनी है? 2 पॉइंटों की तो बनेगी नहीं। अब हम क्या करेंगे? नाउ एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे और ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर थे। एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू 9C3 माइनस 3C3 माइनस 4C3, क्योंकि इन 2 पॉइंटों से कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं। इट कम्स आउट टू बी 987,321 माइनस 1 माइनस 4, कैलकुलेशन किया 84 माइनस 5, इट कम्स आउट टू बी 79। इट कम्स आउट टू बी, द राइट आंसर क्या आ रहा है? द राइट आंसर कम्स आउट टू बी, इट इज 79। क्वेश्चन नंबर 11 का द करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12th ऑफ अवर असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 12th इज the number of ways, the number of ways in which 9 different objects the number of ways in which 9 different objects can be divided into three groups of 2, 2 and 5 objects is 756, B 378, 1512 and D 164।
और हमें पता है क्या, हमें वी नो द रूल, it is n things, n objects or things, n objects or things can be distributed n objects or things can be distributed into three groups of M and P, if I can say MP are n factorial, m factorial, r factorial, and it is p factorial. M factorial, r factorial, and p factorial. If if size of the group is important, मतलब जो दो सेम एक जैसे आ रहे हो, the size of group is important, यदि इस वजह से आ जाए m of a kind, I can say this thing, if n objects can be distributed into three groups of M, and P are n factorial, m factorial, it comes out to be p m factorial, and p into 2, because ये 2 factorial to इसके लिए आता है. So here same ऐसे बनेगा, हम क्या कहेंगे, यहाँ पे there are 9 different things. So there are total number of ways are so total number of ways are 9 factorial. Ways मतलब in which 9 different objects can be distributed are 9 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 5 factorial into 1 by 2. I can say this is 9, 8, 7, 6, 5 factorial, 2, 2, 5 factorial into 2. This will be cancelled out. Now 2, 4, 8. 9 into 42. 378. So the right options of question number 12 is B option. So I'm now after 12th, I'm just coming to question number 13. Question number 13 of our booklet is the number of ways in which 9 different objects can be distributed to 3 different people, giving 2, 2 and 5 objects to each of them is A 328, B 984, C 756, D 2268. अब आप ये ध्यान से इस क्वेश्चन को करने से पहले पिछला क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में कहां डिफरेंस आ रहा है. क्वेश्चन में डिफरेंस आ रहा है द नंबर ऑफ वेज टू 3 डिफरेंट पीपल. पिछले क्वेश्चन में था कि इनटू 3 ग्रुप्स, उस क्वेश्चन में लिखा था 3 ग्रुप्स. ग्रुप्स में कोई पर्टिकुलर नहीं था,
यहां पे टू 3 different people, that means order of the group is important. Here I can say order of group is important. जो पिछली बार पहले मैंने पॉइंट लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था? m things can be arranged, it is n things. N things can be arranged in a group of m n n p are by n factorial, it is by m r and p by m factorial r factorial r factorial p factorial. ब्रैकेट में किसको कंप्लीट लिख लेना, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जब तो आपको कह देंगे उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो, तब तो हम लिख देंगे n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल r फैक्टोरियल जितने जितने का देंगे। लेकिन जब वो आपको स्पेसिफिकली दे देंगे कि 3 डिफरेंट पीपल, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, स्पेसिफिकली मेंशन आउट कर दिया है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। सो इफ, अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, if order of the group is important, then n things can be arranged in a group of n, in a group of m, r and p by n factorial, m factorial, r factorial into 3 factorial. इसका मतलब है इस केस में जब हम करेंगे तो ये वाला लगेगा, ये वाला पॉइंट लगेगा। इसको मैं रब कर रहा हूं। नाउ हियर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 थिंग्स कैन बी अरेंज in a, can be arranged to 3 different people, by 9 factorial, 2 factorial, 2 factorial, 5 factorial into 3 factorial ways. That means, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का क्या वे आउट है, वैसे ही है। इट इज 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, 2 2 into 3 into 2, it is 5 factorial. This will be cancel out, 2 से 2 cancel out, 2 से 4 cancel out. This is equal to 36 into 7 into 18. It comes out to be 36. 252 into 18. It comes out to be, if we multiply it, we got it what it comes out to be. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो द करेक्ट आंसर इट इज 9 into 4. It comes out to be 9 into 4 into 7 into 6 into 3. It comes, इन सबको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, दिस इज 2268. द करेक्ट आंसर इज, इट इज 2268. So that means the right answer is D option. So question number 13 का the right option is D.